visible part. जो ये आपको white नजर आ रहा है ना eye का, that is sclera, but over it is conjunctiva. That's a transparent membrane. Plus conjunctiva जो है वो यहाँ sclera से होके रिफ्लेक्ट होता है ऑन द eyelids. It does not go posterior. देखें हमारी eyeball जो है it's a globe like structure. तो यूं समझ लें कि जो इंटीरियर पार्ट ऑफ ग्लोब है that is only covered by the conjunctiva. Posteriorly जो ये पार्ट आपका orbital cavity में अंदर है that is not covered by the conjunctiva. Okay. So how these all layers, fibrous, vascular and neural layer, they are derived, and we'll be discussing the formation of optic nerve. Why, as I said, that when we were discussing the, I think it was a developmental lecture, or when we were discussing PNS formation, yes, peripheral nervous system. I told you that we'll be discussing the optic nerve, olfactory and vestibulocochlear along with the spatial senses. So I'll be discussing the formation of optic nerve, why optic nerve development is different from rest of the cranial nerves. Okay, and then at the end, I hope time will allow that we'll be discussing the congenital anomalies. So just a revision of what you have done in the eyeball. This is the outermost layer. Okay, this is the sclera. See why this is different from rest of the other structure. If you know the normal anatomy of the eyeball, the outermost layer, which is known as the fibrous layer, consists of posterior 4/5 sclera and anterior 1/5 is the cornea. Okay, they are derived from the outermost structure, but the difference is that the sclera is purely white and the cornea is purely transparent, although this is a single layer. And then this sclera posteriorly, it fuses with the outermost layering, rather it fuses with the dura mater of the optic nerve. Okay, optic nerve is covered by the meninges, so this outermost layer is actually fusing with the dura mater. The second layer is the vascular layer. This reddish, you can see, this is the choroid. Okay, choroid is formed by the mesenchyme because it's a vascular structure, and it resembles with, or it fuses posteriorly with the pia mater. Pia mater is the inner layer, which is the, I hope you might be knowing that whenever there is raised intracranial pressure, we look for the eyes through the ophthalmoscope to see papillary edema. This topic you will discuss in the spatial senses. Raised intracranial pressure we see through the eyes. Why? Because the meninges are present up to the optic nerve. Up to this space, meninges are present. And when meninges are present, that means subarachnoid space is present. When subarachnoid space is present, means CSF is present. So whenever there is increased intracranial pressure, देखें, patient complain करेगा headache की. अब how to know that this headache is because of raised ICP, intracranial pressure? तो हमें CSF का pressure देखना होता है. अब जल्दी में हम मैनोमेट्री या और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, हम कहीं और से नहीं देख सकते कि प्रेशर कैसे रेज है. वी जस्ट लुक इनटू द आईज एंड सी दैट देयर इज ब्लरिंग ऑफ द ऑप्टिक डिस्क. ओके, देयर इज एन एरिया where optic nerve is leaving the eyeball, that's called as the optic disc. If that is blurred, that means the intracranial pressure is raised. This is because developmentally the layers of the eyeball, they are fused with the meninges. Okay, so actually this is, since this part is directly neural derivative, these are mesenchymal derivative, ये जो अंदर का part आ रहा है, that is neural derivative. So coming back to the development of the eye, the neuroectoderm of the forebrain. Now from which part actually this eye is developing? Everyone knows that the eye is developing from the nervous system is developing from the neural tube. Okay, when neural tube is about to close, means it's yet not closed, it starts dividing. When it is closed, it starts dividing into the primary brain vesicles, prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. Then these three divide into the secondary brain vesicles. The prosencephalon will divide into telencephalon and diencephalon. The diencephalon is the area, diencephalon is the structure which will give rise to these eyes. Okay, आपने देखा है कि optic chiasma and these structures, they are crossing the area of the diencephalon because the eye is developing from the diencephalon. So you can see
This is the developing neural tube about to close, and this is the primary brain vesicle, which is known as prosencephalon. Now, prosencephalon has divided into two. This is the this part will develop into the telencephalon, and this part is actually the third ventricle, which is developing into the diencephalon. On either side of the diencephalon, there is development of the eye. Okay, I'll be showing you different structures. The surface ectoderm will give rise to the lens. So eye is not a single structure. It is derived from different parts. The mesoderm or the mesenchyme will give rise to the fibrous and the vascular layer, and there is part taken by the neural crest cells as well. You know very well that the musculature of the head and neck is also formed by the neural crest cell. जो pharyngeal arches का musculature है, उसमें neural crest cells होते हैं. Similarly, the corneal endothelium and some part of the sclera and choroid are also formed by the neural crest cells. You will come to know. So, on which day of life the eye starts developing? ठीक है? तो जब primary brain vesicles ही होती हैं, but where the future diencephalon is going to form, optic grooves form होते हैं. ठीक है? पहले जब आप इस तरह देखते हैं तो हमारी eyes जो हैं वो यहाँ पे बनती हैं, sides में. ठीक है? जैसे ear है, ये यहाँ पे sides में बनती हैं. फिर क्या होता है कि embryo fold होता है. तो जैसे ही हमारी folding होती है, तो ये eyes फिर घूम के यहाँ पे anteriorly आ जाती हैं. Otherwise, it is, you can see sides से नजर आ रही हैं. This is the optic groove, which is developing from the prosencephalon. But at which site is it is developing? At the future diencephalon. अभी तक secondary brain vesicles बनी नहीं है. But here the secondary brain vesicles will be formed. Okay. So the first change which happens in the development of eye is the appearance of the optic groove on day 22nd. Okay. जब तक neural groove अभी close भी नहीं हुआ, optic जो grooves हैं वो form होना शुरू होंगे. Then they will form the optic vesicle, and optic vesicle will change into optic cup. All these steps you will easily understand. And then the cavities of the brain vesicles, they are continuous with the brain. Okay, forebrain rather. So this is another diagram. This is the developing neural tube, which is closing, and this is the prosencephalon, and this is the site of the diencephalon where the optic vesicle is first optic groove and then optic vesicle is being formed. Vesicle means swelling. दोनों साइड से दो swellings निकलती हैं. ठीक है? वो swellings extend होती जाएंगी, यूं extend होती जाएंगी, and then this extension will form the optic nerve. और ये जो eyeballs बनेंगे, that will, because of folding of the embryo, यूं anteriorly आ जाएंगे first, or they are on the lateral side. ठीक है? Or as soon as this optic vesicle is growing, it will come in contact with the surface ectoderm. ठीक है? ये surface ectoderm है जो skin भी बना रहा है और different structures बना रहा है. अब ये contact क्यों जरूरी है? Because this part, surface ectoderm, has to form lens. ठीक है? Lens neuroectoderm से नहीं बन सकता. अच्छा, इसके लिए अगर रीजन क्या होगा कि लेंस अगर नहीं, किसी को कंजेनाइटल एब्सेंस है लेंस की, दैट वुड बी इफ ऑप्टिक वेसिकल इज नॉट कमिंग इन कांटेक्ट विद द सरफेस एक्टोडर्म. ये आप यूं समझ लें जैसे अगर कोई दुपट्टा में फ्रेश डाई करती हूँ, ठीक है, ब्लैक कलर का डाई किया हुआ है, तो मैं उसको ड्राई करके फिर मैं तय करके रखूंगी. अगर सपोज मैंने वो जो गीला डाई किया हुआ दुपट्टा है वो मैं व्हाइट कपड़े के ऊपर रख लूं, तो क्या होगा? पूरा का पूरा उसका ब्लैक कलर जो है वो व्हाइट कपड़े पे लग जाएगा. दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ लेंस. हाउ? दिस ऑप्टिक वेसिकल, यूं समझ लें ये डाई किया हुआ ब्लैक दुपट्टा है और ये व्हाइट दुपट्टा है. जब तक ये इसके साथ कांटेक्ट में नहीं आएगा, सरफेस एक्टोडर्म विल नॉट स्टार्ट फॉर्मिंग द लेंस. ओके, तो ये कांटेक्ट जरूरी है. अगर कांटेक्ट नहीं हुआ तो लेंस नहीं बनेगा. जैसे ही कांटेक्ट हुआ, डिफरेंट रेगुलेटरी जीन्स आती हैं. इन आई दिस PAX6 जीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन. ठीक है, तो अल्टीमेटली देयर विल बी चेंजेस इन द सरफेस एक्टोडर्म, और वो किस तरह लेंस बन के अंदर आई में चला जाएगा और आई फिर बंद हो जाएगी. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. सो वी आर कमिंग टू दैट. अगेन द सेम. इज देयर एनी क्वेश्चन? I'll take questions at the end, please. आप लिखते जाएं भले. I will come back to that slide. आप लिखते जाएं whatever question is. Maybe आपके question का आंसर आगे आपको मिल सके. ठीक है?
again another diagram. Why I have kept it, just to make you understand that how this hole is neural tube, okay, and this is the area of prosencephalon, ठीक है, and then this is the formation of the, पहले ऑप्टिक एक ग्रूव बन जाता है, फिर ये स्वेलिंग की तरह होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है. This optic vesicle is coming in contact with the surface ectoderm. This is the optic groove, सही है, and then this is the formation of the optic vesicle, and this vesicle is coming in contact with the surface ectoderm, and surface ectoderm will start forming uh, the the lens, okay. This picture, I will come back to this picture. Actually, during the formation of the ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल पहले बनती है, और फिर यही ऑप्टिक वेसिकल आप देख सकते हैं, इसके दो लेयर्स हैं, एक ये आउटर वन व्हिच इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द सरफेस एक्टोडर्म, और एक जो इनर वन है दैट इज इन कांटेक्ट विद द ब्रेन, ठीक है. दीज आर टू लेयर्स ऑफ द ऑप्टिक वेसिकल. पहले ये स्वेलिंग की तरह, वेसिकल की तरह बनती है, फिर ये कप बन जाती है, यूं यूं अंदर ये डेविएट होती है. कब? जब व्हेन इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द सरफेस एक्टोडर्म. जब ये सरफेस एक्टोडर्म से आएगी तो सरफेस एक्टोडर्म विल पुश सम स्ट्रक्चर इनसाइड, ठीक है. तो पहले यूं है, और फिर जब ये सरफेस एक्टोडर्म बाहर से पुश करेगा तो ये यूं कप शेप बन जाएगी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ये अब कप शेप बन गई है, ठीक है. एंड दिस लेंस, ये कप शेप जरूरी है ताकि वो जो बाहर से एक्टोडर्म आ रहा है दैट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड. ये लेंस का पार्ट जो है इसको अंदर, आई के अंदर जाना है. दैट्स व्हाई इनिशियली वेसिकल and then cup shaped structure, the lens will go inside. This is as if like if you are putting the egg in the egg cup. एक कप होता है ना छोटा सा, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कप है, तो actually this is the optic cup, okay. Initially it was a vesicle, then it became the cup, सही है. and इस कप में फिर ये जो वेसिकल है, लेंस वेसिकल, ये डिटैच होके अंदर चली जाएगी. Now, during formation of this lens, optic cup, there is a groove on the anterior side plus groove on the lower side as well. This I will make you understand more. This lower side groove is known as choroid fissure. आप सब ने normal structure of eyeball पढ़ा है, ठीक है. अब eyeball में आपने देखा है कि न्यूरल लेयर जो रेटिना है उसके बाहर कोरॉइड है, सही. मतलब कोरॉइड जो है दैट इज अ वेस्कुलर स्ट्रक्चर. और देखें, वेस्कुलर स्ट्रक्चर न्यूरल लेयर से नहीं आएगा, दैट विल कम फ्रॉम द मेसेनकाइम. आपको पता है ब्लड वेसल्स जो हैं वो सारी मेसेनकाइम से बनती हैं, ठीक है. एक तो ये. दूसरा, आपने देखा होगा कि अंदर विट्रस है, ठीक है. विट्रस इज आल्सो अ मेसेनकाइमल स्ट्रक्चर. अब आप ये सोचें कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, देखिए ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. अब दो चीजें बनी है, एक तो बाहर से मेसेनकाइमल लेयर बना, ये मैंने छोटा सा एक और लिया हुआ है, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब इसका प्रॉब्लम ये है कि आई बॉल को पूरा क्लोज होना है, ठीक है, लेकिन पीछे से ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, बिकॉज ऑप्टिक नर्व जो है वो यहाँ से एक्सटेंड होके बनेगी. अच्छा, ये पूरा का पूरा गोल तो बनेगा, इसके बाहर जो है अगर मैं ये रख दूं तो ये मेसेनकाइम आ गया मेरा दुपट्टा, तो दिस विल फॉर्म द कोरॉइड इन द स्क्लेरा. दिस इज द न्यूरल लेयर ऑफ द रेटिना. और ये स्मॉल ग्लास के दो लेयर्स हैं, एक आउटर लेयर है और एक इनर लेयर है, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली, आप समझ लें ऑप्टिक कप, समझ लें ऑप्टिक वेसिकल, समझ लें. अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने विट्रस पढ़ा है, ठीक है, विट्रस ह्यूमर इनसाइड. अब विट्रस ह्यूमर इज अ जेली लाइक मटेरियल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर विट्रस ना हो तो आईबॉल की शेप ही नहीं हो, ग्लोब शेप. आईबॉल कोलैप्स हो जाए, अगर विट्रस निकल जाए तो आईबॉल कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है. और विट्रस क्यों रहना जरूरी है? विट्रस का काम है कि वो रेटिना को अपनी जगह पे रखता है. अगर विट्रस कोलैप्स हो जाए तो रेटिनल डिटैचमेंट होती है, ठीक है, एंड दैट लीड्स टू ब्लाइंडनेस. अच्छा, तो विट्रस और उसके अंदर आपने हाईलाइट कैनाल पढ़ा होगा, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? आई होप यू हैव. if there is any confusion, I'll come back to the gross anatomy structure. तो वो highlight canal जो है, that is actually the highlight artery during embryonic life, और वो अंदर होती है, ठीक है. अब विट्रस भी अंदर है और हाईलाइट आर्टरी भी अंदर है. अब ये दोनों मेसेनकाइमल स्ट्रक्चर्स, तो ये दोनों मेसेनकाइमल स्ट्रक्चर्स अंदर कैसे गए? द रीजन इज कि पहले ये गोल
बंद नहीं होता, इट्स इनिशियली ऑप्टिक कप एंड देन देयर इज अ फिशर ऑन द लोअर साइड, दिस इज नोन एज कोराइड फिशर। ये यहाँ पे एक यूं समझ लें डिफेक्ट होता है यूं, और फिर वो बाद में क्लोज होगा, मींस इट विल बी लाइक दिस, दिस इज द ऑप्टिक कप। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे जो है, आई होप यू आर एबल टू सी, ठीक है, ये फिशर है। अब जो कोराइड और स्क्लेरा बनेगा वो बनेगा मेसेनकाइम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, और जो विट्रस और हाइलाइट बनेगा वो मेसेनकाइम विल एंटर थ्रू दिस फिशर इनसाइड, ठीक है, जैसे मेरी फिंगर अंदर गई है, तो ये जैसे ही मेसेनकाइम थोड़ा सा अंदर जाएगा फिर ऑप्टिक कप ये क्लोज होगा, फिर ये कोराइड फिशर क्लोज हो जाएगा और फिर ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी, मींस नाउ मेसेनकाइम इज इनसाइड, ठीक है, आई डोंट हैव एनी अदर थिंग, अदरवाइज आई वुड हैव पुट इनसाइड, यस। तो जैसे ही मेसेनकाइम अंदर गया तो जैसे ये पेन अंदर है, ठीक है, तो ये गई कहाँ से, ये यहाँ से अंदर गई, जब यहाँ पे ग्रूव था ये अंदर से गई, और थोड़ी देर के लिए यूं समझ लें ऑप्टिक कप ने से रास्ता दे दिया, ये भी अंदर गई, इसने जो मेसेनकाइम था विट्रस बना दिया, प्लस हाइलाइट आर्टरी बना दी, दिस हाइलाइट आर्टरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अडल्ट स्ट्रक्चर नहीं है, दिस इज एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। हाइलाइट आर्टरी इज सप्लाइंग ब्लड टू दी लेंस। अब आप मुझे बताएं, इज लेंस अ वेस्कुलर स्ट्रक्चर? मैंने म्यूट किया हुआ है तो आंसर तो जाहिर ही नहीं आएगा, वैसे क्लास में भी नहीं आता था, तो आई यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन from myself and answer myself. So lens and cornea both are avascular structure, remember. तो हाइलाइट आर्टरी, बट देखिए ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, चाहे बाद में भले वो न्यूट्रिशन चली जाए। लेंस इज एन एवेस्कुलर स्ट्रक्चर बट ड्यूरिंग डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ ग्रोथ इट नीडेड अ ब्लड सप्लाई, तो ये हाइलाइट आर्टरी इज एक्चुअली सप्लाइंग द लेंस till lens grow into a bigger structure, and when lens is finally made, this hyalide artery obliterates and becomes the hyalide canal. Is this clear? The vitreous and the hyalide canal, hyalide artery, they are mesenchymal structure. They are incorporated from below through this choroid fissure, and once the mesenchyme is incorporated inside, this choroid fissure will close, and the optic cup will then start forming rest of these structures. I'll come to tell you that. And how lens is getting inside, I told you this is actually getting detached from the surface ectoderm. I'll come again on this point. So vascular mesoderm invade the fissure. This mesoderm later forms the hyalide vessels and the vitreous. Okay, ये बात समझनी जरूरी है कि किस तरह ये अंदर दोनों जा रहे हैं, विट्रस और हाइलाइट, और उसके बाद फिर कोराइड फिशर क्लोज हो जाता है। Okay, so this is the same, and then the central artery of retina, ये भी जो है वो इसी मेसेनकाइम से बनती है। आपने देखा होगा कि ऑप्टिक नर्व ऑल अराउंड है और उसके बीच में से सेंट्रल आर्टरी निकल रही है, क्योंकि ये कोराइड फिशर के थ्रू ये मेसेनकाइम अंदर गया था, एंड थ्रू आउट लेंथ दे आर फॉर्मिंग दी स्ट्रक्चर्स। Here you can see ये इस तरह क्लोज हो रहा होता है ऑप्टिक कप। दिस इज दी central fissure choroid, and then the retinal fissure forming the central retinal artery, and ultimately all other different structures would be formed. Achha, this is the formation of the optic stalk. Now coming back, this is the optic groove, this is the optic vesicle. Okay, अब ये जैसे ही ब्रेन से निकलता है ऑप्टिक वेजिकल ये समझ लें ये ऑप्टिक वेजिकल है, ठीक है, और ये इसका कनेक्शन है ब्रेन के साथ। जैसे ही ये ऑप्टिक वेजिकल निकलता है तो इट ग्रोज, ठीक है, ये ग्रो करता जाएगा, तो ये जो पार्ट है दिस विल फॉर्म माय आर्म, दिस विल फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। अब देखें ये ग्रो करता जा रहा है, ये लेंथन होता जा रहा है, एंड देन दिस विल फॉर्म, फर्स्ट वी कॉल इट एज ऑप्टिक स्टाक, एंड अल्टीमेटली दिस विल फॉर्म दी। तो यूं समझ लें कि आपने कार्टून्स तो देखे होंगे, सही। अब जो भी जब भी टॉम एंड जेरी या वो कोई ऐसी भयानक सी चीज देखते थे तो उनकी आंखें यूं बाहर निकल आती थी, ठीक है। अब वो हमारी आंखें तो बाहर नहीं निकल सकती, बट एक्चुअली ड्यूरिंग डेवलपमेंट दिस प्रोसेस इज हैपनिंग दैट आवर आईज आर developing from the brain, and then ultimately they are coming forward so that they should lie in the orbit, और फिर स्कल ग्रो होती है and everything else। देखें स्कल या बोन्स जो हैं वो बाद में ग्रो होते हैं, पहले सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स ग्रो होते हैं, ठीक है। ये इस तरह है
आपने कभी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया है? अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में यूं अपनी ये फिंगर्स डाल दूं, ठीक है, थोड़ी देर उनको होल्ड करूं और फिर निकाल दूं, तो क्या होगा वहां पे मेरी फिंगर्स बन जाएंगी, ठीक है। तो गॉड हैज मेड अस लाइक दिस। जो भी हमारे स्कल में फोरामिना है, जो भी हमारे स्कल में फिशर्स हैं, आप देखें सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर क्यों है, फोरामिना क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे पहले स्ट्रक्चर्स हैं और उसके फिर ऑल अराउंड मीजनकाइम आके बोन बना देता है। अब क्योंकि फिशर की जगह पे बहुत सारी स्ट्रक्चर्स थी, तो अलग अलग बोन, अलग अलग फोरामिना नहीं बन सकता था फॉर ऑक्यूलोमोटर नर्व, फॉर यू नो दिस, फॉर द एब्ड्यूसेंस नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व। तो what God did, he gave a larger space in the form of fissure. इसी तरह मैंडिबुलर नर्व की जगह पहले नर्व गुजर रही है, उसके ऑल अराउंड फिर बोन बन जाती है, तो वो मैंडिबुलर फोरामेन बन जाता है। सो वी आर एक्चुअली मेड लाइक soft tissues are made first, and from wherever they are passing, ultimately they will form the bone outside. जो जो फोरामिना बने हैं वो बाद में बने, और उसी जगह पे पहले पहले स्ट्रक्चर्स मौजूद थे। So this is the formation of the optic stalk. I hope we have enough time. Okay. So now how lens is formed. अब lens की formation भी बड़ी tricky है. How it's tricky? Because there is the first and foremost important point is that the optic cup and optic vesicle should come in contact with a certain area of the ectoderm, surface ectoderm. जैसे ही ये contact होगा, genes आएंगी and they will modify the surface ectoderm and this will form the lens placode. ठीक है, placode यूं समझ लें कि एक निशान बन जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा सरफेस एक्टोडर्म के, यहाँ ये एरिया लेंस बनाएगा। दिस लेंस placode will then depress down, जैसे न्यूरल ट्यूब बना था ना सरफेस एक्टोडर्म से ही, बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग नोटोकॉर्ड, और वो आहिस्ता आहिस्ता से ट्यूब डिटैच हुआ, क्लोज हुआ, and then the surface ectoderm repaired. The same is happening with the lens. The optic cup is coming in contact with the surface ectoderm. There is formation of lens placode, then the lens pit. ये जो डिप्रेशन देख रहे हैं ना जहाँ पे मैंने रेड डॉट रखा है, दिस इज लेंस पिट। अच्छा, उसके बाद फिर लेंस वेजिकल बनती है इस तरह, ठीक है, ये लेंस वेजिकल बनेगी। अल्टीमेटली जहाँ पे मैंने अभी रेड डॉट रखा है, यहाँ से ये डिटैच होगा, ठीक है, ये सरफेस एक्टोडर्म से डिटैच होके अंदर ऑप्टिक कप में चला जाएगा, फिर ऑप्टिक कप बंद होगा। तो दिस इज द स्टोरी दैट हाउ लेंस इज गोइंग इनसाइड। देखिए लेंस हमारा इनर लेयर में है, इट इज इनसाइड द आई, इट इज इनसाइड द फाइब्रस लेयर। तो देखिए फाइब्रस लेयर तो अभी बना ही नहीं है, तो लेंस को पहले अंदर जाना है ताकि बाहर से फिर फाइब्रस लेयर बन जाएगा। जब कॉर्निया बन जाएगा तो लेंस अंदर नहीं जा सकेगा, क्योंकि प्यूपिल इज अ गैप, प्यूपिल भी बाद में बनेगा। लेंस इज अ बिगर स्ट्रक्चर, प्यूपिल इतना छोटा है कि उसके अंदर से लेंस नहीं जा सकता, अभी ना तो आयरस बना है ना लेंस। तो दिस इज एक्चुअली स्टेप वाइज फॉर्मेशन। पहले ऑप्टिक कप बन रहा है, उसमें अंदर जो है वेसल्स जा रही हैं, विट्रस भी अंदर चला गया, अब नीचे कोराइड फिशर, ये आपको नजर आ रहा है, दिस इज कोराइड फिशर, ठीक है। ये पूरा जो आप एक लाइन देख रहे हैं ना, कोराइड फिशर, और फिर ये रेटिनल फिशर। ये रेटिनल फिशर इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, और ये जो कोराइड फिशर है फॉर विट्रस एंड द हाइलाइट आर्टरी। अच्छा, ये लेंस वेसिकल जो है डिटैच होके अंदर चला जाएगा, ओके, दिस यू कैन सी ये लेंस अंदर जा रहा है। तो ये जो वेसिकल थी, लेंस का ये काम है कि वो ऑप्टिक वेसिकल को ऑप्टिक कप में बदल रहा है। पहले ये यूं था, ठीक है, पहले ये यूं था, अब ये यूं बन रहा है, बाहर से ये ऑप्टिक कप यूं बन जाएगा, ठीक है। तो एक ऑप्टिक कप का ये लेयर है इनसाइड, दिस इज द इनर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप एंड दिस इज द outer layer of the optic cup. ये आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, क्योंकि how the retina and other structures are developing, they are based on these. So this lens is going inside, detaching. Again, another very good diagram I got this. This is the optic vesicle. Okay, this is coming in contact with the surface ectoderm. This is the lens placode, and as the lens is forming the तो ये अब ऑप्टिक कप बन गया। ऑप्टिक कप के दो लेयर बन गए, एक तो इनर लेयर है और ये आउटर लेयर है। बोथ द आउटर लेयर इज कंटिन्यूअस विद द ब्रेन।
Okay, so this is the lens which is being formed. Ultimately, it is getting detached from the surface ectoderm and is incorporating inside. अच्छा, lens यूं समझ लें, ये यूं है. This is the charger. I hope you can see this. ठीक है, surface ectoderm में आहिस्ता आहिस्ता से जब लेंस ये वह जाता है, ठीक है, ये इस तरह बन जाता है लेंस वेजिकल, और फिर ये डिटैच हो जाएगा. ये डिटैच होके ये अंदर चला जाएगा ऑप्टिक कप में. सही है, दिस इज गोइंग इनसाइड. अच्छा, ये जब लेंस वेजिकल बनता है तो अंदर से ये खाली है. डू यू सी, दिस इज एम्प्टी. नाउ देयर आर टू लेयर्स. एक ये पोस्टीरियर लेयर है और एक ये एंटीरियर लेयर है लेंस का. ठीक, this is the layer detect for this time with the inner layer of the optic cup. और इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं, ये आप ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है, that is actually the mesenchyme, which will form the vitreous as well as the hyaloid artery. ठीक है, hyaloid artery लेंस को ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देगी, and the posterior layer of the lens will start growing. ठीक है, ये लेंस की posterior surface जो है, this will start growing and it will form the primary lens fibers. ठीक है, लेंस जो बना होता है वो लेंस फाइबर्स से बना होता है, और वो फाइबर्स बनती रहती हैं थ्रू आउट लाइफ. आपको पता है कैटरेक्ट क्यों होता है? क्योंकि वो फाइबर्स जमा होती जाती हैं, एंड अल्टीमेटली जो लेंस एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, 65 या 70 ईयर्स के बाद बिल्कुल ओपेक हो जाता है, तो पर्सन कैन नॉट सी. तो फिर lens. So this is actually the formation of the primary lens fibers during intrauterine life. उसके बाद यहाँ पे secondary fibers बनना शुरू होंगी. Ultimately ये gap fill हो जाएगा. तो lens would be a biconcave structure, biconcave glass, and then ultimately we form the primary fibers which will change into the secondary fibers. Ultimately you get this structure. Okay, this is the anterior part and this is the posterior part. Remember that the growth is from the posterior part of the lens. Okay, this is another diagram. We have just again the formation of, देखें ये फिर ultimately detach होके अंदर lens बन जाएगा, और फिर बाहर से ये rest or all layers will form, and this anterior portion will then convert into the cornea, and posterior portion of the mesenchyme will convert into the sclera. So now coming to the retina development, which is very important. I told you, and you are now very clear, that there are two layers of the retina. One was the outer layer, another was the inner layer. देखें, आपने retina मेरे ख्याल में पढ़ा है is the neural layer, लेकिन histology of eye is coming week on the Monday. So the retina actually consists of 10 layers. 10 layers होते हैं retina के, जो जैसे layer of and cones, ganglionic layer, ultimately there are lots of layers. ये सारे layers जो हैं help करते हैं in transmission of the light. Okay, और फिर ये light हमारी transfer करती है cells through the optic nerve towards the brain. ठीक है, तो अब ये 10 लेयर कैसे बन रहे हैं? अभी तक मैंने आपको 2 लेयर्स बताए हैं. कौन से? आउटर पिगमेंट लेयर, okay, outer pigment layer, and the inner. Okay, this is the outer layer. Can you see the arrow? I don't know. Okay, wait, I'm turning on this. Wait. Okay, this is the outer layer and this is the inner layer. Okay, this is the early stage of the formation of the retina. The outer layer will form the
Outer layer will form the pigment layer of the retina, and the inner layer will form the remaining layers of the retina. So the pigment layer would be in contact, because it is outer layer, so it is in contact with the choroid, and the inner layer would be in contact with the vitreous. ठीक है, दोनों sides पे mesenchyme है, from inside as well as from outside. The inner layer is very important in a sense that inner layer will divide into two parts. The posterior 4/5 will be called as pars optica retina, and anterior 1/5 will be called as pars ceca retinae. It's very important to understand that the inner layer, although it is a continuous layer, but from inside, if you see this cup, जो inner layer का posterior 4/5 है, this will form the okay, जो layers बनाएगा, और pars ceca retinae, which will form the iris as well as the ciliaris. These are divided competence, but you need not to remember it. Just remember that from the inner layer, from anterior 1/5 of the layer, ciliary body and iris are formed. From the posterior 4/5 layer, the retina is formed. अच्छा, अब रेटिना के बाकी लेयर्स मैंने आपको सिर्फ अभी तक एक लेयर बताया, ठीक है, that is the outer pigment layer of the retina, and then from where the remaining layers are formed, the inner layer, which is forming the posterior 4/5, which is known as pars optica retinae, it will divide into two parts. एक जो सबसे पहले जो developmental यूं समझ लें कि लेयर बनता है, एक तो आउटर पिगमेंटेड लेयर बनता है, एंड देन द सेकंड लेयर व्हिच इज बीइंग फॉर्म्ड इज द लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स. ठीक है, बाकी लेयर्स बाद में बनते हैं. तो कौन सा लेयर बन रहा है? द लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द mental layer. The mental layer will ultimately form remaining 8 layers. ठीक है, टोटल मैंने कितने बताए थे? 10 layers. एक तो पिगमेंट लेयर हो गया, दूसरा लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, बाकी कितने बचे? 8. 8 will be formed from the mental layer. There is no is a single layer in the retina in the adult life, but it will be formed by the mental layer of the pars optica retinae of the inner layer of the optic cup. Okay, all the inner 8 layers, okay, will be formed by the mental layer of the pars opticae retinae of the inner layer of the optic cup. This is the terminology actually used. Okay, again another diagram you see. This is the optic cup. This is the outer layer, okay, and this is the inner layer of the optic cup. The inner layer will be further divided into the posterior 4/5 and anterior 1/5. Anterior 1/5 will form the iris and the ciliary body, and posterior 4/5 will form the 9 layers of the retina. अब 9 layers में सबसे पहले rods and cones बनेगा, और दूसरा mental layer बनाएगा. Mental layer will further divide into 8 layers. So this is also another nice diagram. You can see the purple is the outer layer. Okay, this outer layer and the inner layer. The inner layer is forming, which parts are formed? Actually, iris as well as the ciliary body. They are not only formed from the inner layer, they also contain the anterior epithelium. जो anterior myoepithelium या muscles जो होते हैं, that will come from the mesenchyme. So जैसे आपको पता है iris में sphincter and dilated pupil होता है. So these are muscles. Muscles are formed from the mesenchymal part. Similarly, the ciliary body has the epithelium, pigmented epithelium, plus retinal pigment epithelium. They are all from this purple layer, which is in continuity, is coming from the outer layer, and this will form the in continuity. This will form the structures. Okay. Then the inner layer is the greenish color is the inner layer. This will form the neural retina. अच्छा, ये आपको पता है ora serrata. Ora serrata is a structure which is present in the adult eyeball. It is the area where neural retina stops. इससे आगे neural retina नहीं होगा, लेकिन उसके derivatives होंगे. By neural retina we mean the light sensitive retina. तो light sensitive retina
पोस्टीरियर 4/5 तक होता है, एंटीरियर 1. So ora serrata is an area where the neural retina will stop. Okay. Now this is the formation of the optic. I don't know why I'm unable to turn on this red spot. Okay. So this is the formation of the optic cup. Now how neural nerve is being formed. Actually जब ये inner 8 layers form हो रहे हैं of the retina, what is optic nerve? These are actually axons. किसके axons हैं? Ganglion cells के. और ganglion cells कहाँ पे हैं? Within the neural retina. So since it's a sensory nerve, okay, it is carrying the sensation from the eye and then it is sending its axons. So ganglion cells are present. These are the ganglion cells which are present within the you can say the retina. Okay. और center में ये red artery आप देख रहे हैं. This is the central retinal artery और this is the retinal fissure जो close हो चुका है. और ये अंदर artery कैसे गई? मैंने आपको बताया पहले fissure था, इसके अंदर artery चली गई, उसके बाद ये fissure बंद हो गया और फिर ये artery अंदर रह गई. ठीक है. अच्छा, ये गैंग्लियन सेल्स के फाइबर्स एक्सॉन्स फिर बाहर जाते हैं. कहाँ जाते हैं? टुवर्ड्स द ऑप्टिक स्टाक. गैंग्लियन सेल्स यहाँ पे हैं और ये अपने एक्सॉन्स भेज रहे हैं. ठीक है. टुवर्ड्स द नर्वस सिस्टम. तो ये क्या है? ऑप्टिक स्टाक. तो यहाँ से ये एक्सॉन्स गुजरते हैं. तो व्हाट इज nerve? Actually collection of axons. So collection of axons is known as nerve. And from where these axons are coming? These are actually the axons of the ganglion layer which is present inside the retina. ठीक है. So this is the formation of the optic nerve. Optic nerve is formed elongation of the optic vesicle and the optic cup, and the axons which are present inside the optic nerve, they are coming from the ganglion layer of the optic nerve. This topic is not as simple to understand from the book. That's why I just wanted, and yesterday I was very much disheartened when my voice was not, you were not picking up my voice. Anyways, this is the complicated structure the adult part has. This is the cornea, ठीक है, और this is the anterior chamber of the देखिए eye पे बहुत सारे questions आते हैं. So do cover the at least the gross anatomy of the eye. What is the difference between anterior and posterior chamber? What are the boundaries of anterior posterior chamber? These are very important point. This is the lens. ठीक है. आप देखें अब lens एक बाहर से आया था और किस तरह अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया. अच्छा, लेंस जब बन जाता है तो उसके बाद फिर ये जो आउटर एंड इनर लेयर ऑफ रेटिना मिलके, आउटर एंड इनर लेयर ऑफ ऑप्टिक कप मिलके ये सीलियरी बॉडी बनाएंगे, सीलियरी प्रोसेस बनाएंगे, एंड अल्टीमेटली सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो लेंस के साथ अटैच हो जाएंगे. एंड देन दिस इज द आइरिस. आइरिस के लिए एक इनर एपिथेलियम होगा, ठीक है, जो इनर लेयर से डिराइव्ड है, और एक आउटर लेयर होगा जो आउटर लेयर ऑफ रेटिना से डिराइव्ड है, आउटर लेयर ऑफ द ऑप्टिक कप. ये दो लेयर प्लस इन बिटवीन दी मीजेनकाइम. ये मीजेनकाइम क्या बनाएगा? स्फिंक्सल है जो जिसका काम है कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन टू मेक दीज सस्पेंसरी लिगामेंट्स आइदर टॉट और रिलैक्स सो दैट द लेंस कैन अकोमोडेट. ये भी मीजेनकाइम से आती है, ठीक है. सो दिस इज दी how the anterior 1/5 of the eye. This area is the anterior, the posterior 4/5 of the eye. We have just discussed the formation of the ciliary body and the iris. The iris actually आपको पता होना चाहिए कि iris जो develop होती है पहले एक membrane की तरह होती है, ठीक है, membrane की तरह होती है जो completely lens को close कर रही होती है. This is known as irido pupillary membrane. अच्छा, उसके बाद प्यूपिल की जगह पे वेसिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं और एक गैप बन जाता है और फिर आइरिस में मसल्स बन जाती हैं तो एक सर्कल बन जाता है. Now if and there is closure of the choroid fissure as well, ठीक है. अगर ये choroid fissure, तो ये प्यूपिल इस तरह होता है और choroid fissure जब बंद हो जाएगा तो पूरा आइरिस भी बन जाएगा. अगर ये choroid fissure ना बंद हो, ठीक है, तो आई में जो प्यूपिल आप देख रहे हैं सर्कल नजर आता है, ये सर्कल की तरह नजर नहीं आएगा, ये डिफेक्ट होगा.
What that defect would be called, I am coming in the congenital abnormalities. Okay, so this is how, if the pupil is not closing, what will happen. So there are three parts of the development of the iris: the anterior and posterior part from the retina, then stroma, and ultimately the muscles are also coming from the ciliary body we have just discussed. This is development of the lens. You can see that anteriorly the lens has the gap, but this gap ultimately will be filled by these growing posterior fibers. Okay, Acha. This is the growth of the uh, eyelids. The eyelids will ultimately develop from the outer skin. ठीक है, मतलब surface ectoderm. The eyelids would be formed by surface ectoderm. Once the lens, the cornea, the sclera, all structures are formed, then there will be formation of the eyelids. So development of sclera, choroid, and ciliary body. I told you that the sclera and choroid, they will be formed by the mesenchyme, which is of the outer layer, along the outer layer of the optic cup. The mesenchyme will start forming the sclera and the choroid. Choroid will resemble pyometer because it's a vascular layer and will fuse with the pyometer posteriorly. The sclera will fuse posteriorly with the dura mater, and this will resemble as the tough dura mater of the optic nerve. Okay, so sclera resembles dura mater, choroid resembles the pyometer because it's a vascular layer. The development of cornea is due to the presence of lens. How? देखें, जो आउटर लेयर था, जो स्क्लेरा बना रहा है, वो वाइट है, और कॉर्निया हालांकि उसी लेयर से डेवलप हो रहा है लेकिन ट्रांसपेरेंट है. तो ये किस तरह हुआ? This is when the lens comes in contact with the anterior part of the mesenchyme. Lens स्क्लेरा से कांटेक्ट में नहीं है, वरना पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाता. तो लेंस किस कांटेक्ट में है? एंटीरियरली. अच्छा, इस जगह पे अभी आयरस और प्यूपिल नहीं बना, इसीलिए लेंस इज इन कांटेक्ट विद द आउटर मेसेनकाइम. तो मेसेनकाइम जो लेंस से इन कांटेक्ट है, देयर आर सर्टेन जीन्स रिलीज्ड व्हिच मेक द कॉर्निया ट्रांसपेरेंट. अब ये किस तरह हो रहा है? गॉड नोज. So corneal epithelium is formed from the surface. The surface ectoderm is in contact with the lens. ठीक है, lens अंदर चला गया, अब lens is in contact with the surface ectoderm. Now this part of the surface ectoderm will form the cornea, and because of lens, the cornea will change into a transparent structure. This is how the lens is coming in contact with the okay, this is the optic vesicle. ये lens बन गया. अब जब lens अंदर चला गया, तो now it is in contact with the surface ectoderm. The surface ectoderm will ultimately change into the cornea. Okay, जो anterior part है, बाकी posterior part opaque fibrous ही रहेगा. Ultimately, the eyelids and the conjunctiva, they are again formed from the surface ectoderm. ठीक है, eyelids and conjunctiva, these structures will be formed. Ultimately, the vitreous will grow and the eyeball will have a definite shape. The central part will form the inner neural part will be formed, and outside that there will be choroid, that is the vascular part. The outer pigment layer will be of the retina will be in contact with the choroid. ठीक है, तो जब भी retinal detachment होती है, that is the pigment layer gets detached from the neural layer. The pigment, these are the two layers of the optic cup. So this outer is the pigment layer and inner is the neural layer. The neural layer is going to form the inner 9 layers of the retina. ठीक है, और ये जो outer pigment epithelium है, तो जब भी retinal detachment होती है, that is the pigment epithelium will detach. अच्छा, आपने अगर blood supply पढ़ी है, so you will know that the outer layers, they are supplied, outer layers of the retina, they are supplied by the choroid vessels by diffusion. ठीक है, इनकी blood supply भी इसीलिए choroid से है क्योंकि these outer layer, they are in contact with the choroid. So pigment epithelium, layers of rods and cones, they are getting blood supply. तो अगर retinal detachment हो because of some reason, ये अक्सर diabetic patients में होता है, this pigment epithelium will get detached and inner layers will get detached. तो इनकी blood supply चली जाएगी and there will be blindness.
Just coming, I just want to show you a few clinical aspects. This is congenital cataract. By some reason, if the lens fibers do not grow, okay, they remain opaque, and there is blood supply remains. Remember that the hyaloid artery, which is supplying the lens, it has to obliterate before birth, so that the lens is then converted into a transparent structure. अगर ये blood supply रही तो cataract में तब्दील हो जाएगा. It will not become transparent structure. So this is the congenital cataract of the right eye. This is known as Coloboma iris. This is I wanted to show you. अब आप इसमें देख रहे हैं defect है on the lower side. ठीक है? What is this? Actually, the retinal and the choroid fissure have not closed. अगर वो close हो जाते तो पूरी की पूरी iridopupillary membrane यूं होती and it would have formed the circle pupil. अब क्या हो रहा है कि choroid fissure थोड़ा सा खुला रह गया. जब ये खुला रह गया तो iridopupil membrane यहाँ बन गई, लेकिन वो close नहीं हो सकी. अगर close हो जाती तो pupil circle होता. ठीक है? So this is known as Coloboma iris. Anophthalmia, by some reason, if the optic vesicle is not coming in contact with the surface ectoderm, ultimately the eye will not be found. देखें, बाहर देखने के लिए surface ectoderm जरूरी है. अगर अंदर आई बन भी गई तो it can neural retina बन भी गया, lens नहीं है, cornea नहीं है, eyelids नहीं है, conjunctiva नहीं है, these structures will not be found. This is known as congenital absence of the eyeballs, anophthalmia. Congenital aphakia and aniridia, as the name indicates. Aphakia means absence of lens, aniridia means absence of iris. These structures will not be found if the lens vesicle is not coming in contact with the surface ectoderm, and ultimately lens as well as iris is not found. This is retinal detachment. You can see the here the retina has got detached from the pigment epithelium, and this will lose its blood supply, and ultimately this will occur between the outer pigment and the inner layer. This is the Coloboma iris. So this is retinal detachment. There's loss of blood supply. This is the summary. I hope you can read out here.